Well, dear students, we are going to read out the questions while reading during the poem. When there are some questions appear, for example, when we read the first stanza, right after the first stanza, there were some questions given in your notebook, and here are those questions. The question number one is that who is the speaker in the poem, and what is he doing in the beginning? And the answer should be like the speaker of the poem Daffodils. Well, this is the heading. It would be good if you give the heading of the answer. It will give an impression for the examiner. The answer is the speaker is the poet himself, William Wordsworth. In the beginning, he is wandering alone, feeling a bit lonely and aimless, like a cloud drifting in the sky. Well, the second question is which natural element is compared to in the first poem? I hope so you have understood which question I'm talking about. These are the questions these are the questions taken from the stanza when you read it, and right after reading, you can find these questions written in the box. You can say that these are the box questions. So, which natural element is compared to in the first line? The answer is natural element in the poem Daffodils. The speaker compares himself to a cloud, saying, I've wandered lonely as a cloud, to show his solitude and aimless drifting movements. It is a perfect example of simile in the poem. And the third question is, where does the speaker encounter the daffodils and how are they described? Answer is, in encountering the daffodils. This is the heading of the question. If you give this heading before starting your answer, what it will give you, it will give not, it will give you, it will give and it will create an impression for the examiner who is going to check your paper. So he encounters the daffodils beside a lake and beneath the trees. They are described as golden crowd fluttering and dancing in the breeze, full of life and beauty. In fact, he was walking in the Lake District, which his sister Dorothy, with his sister Dorothy, when he came across these beautiful flowers. So here is a new character, Dorothy, and you know that Dorothy is a sister of the poet whose name was William Wordsworth. That's we have talked about earlier. So he encounters का मतलब होता है आमना सामना होता है उसका. The daffodils वो अपने daffodils से मिलता है, देखता है, सामना होता है. A lake beneath the trees, और नहीं भी पढ़ा है कि लेक जो है वो trees के नीचे है. They are described as a golden crowd, और उन daffodils को वो golden crowd कहता है. Fluttering and dancing, वो डांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं in the breeze, और हवा में. आपको अच्छी तरह याद होगा जब हमने ब्रीज की बात की थी तो हमने ब्रीज की बात की, विंड की बात की, हमने गस्ट की, गेल की, स्टॉर्म की, साइक्लोन की, टॉर्नेडो की बात की थी. डू यू रिमेंबर ऑल दैट थिंग्स? द फुल ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी. In fact, he was walking in the Lake District with his sister Dorothy when he came across these beautiful flowers. And the next question is, how does the poet describe the number of daffodils? So the answer is the number of daffodils, and the answer is he exaggerates the number of daffodils by saying that he sees 10,000 at a glance, stretched in a never-ending line. This shows how vast and overwhelming the sight was. Vast means big, huge, large, and overwhelming means that dominates you, that overpowers you. The sight means the way you look at something, or the man जिसको हम scene कहते हैं. This is an example of hyperbole in the poem. Remember this word hyperbole, it's not hyperbola. Okay, the next question, what action is being performed by the daffodils in the breeze? So the answer is dancing daffodils in the breeze. The daffodils are fluttering and dancing in the breeze as if joyfully moving with the wind. The poet was overjoyed upon seeing the daffodils and personifies the movement of these flowers. And then the question is six, how do the waves beside the daffodils compare to the daffodils themselves? The answer is the daffodils and the waves. Hassan, I would just wait a second. I'll take your answer. Sorry, question. Let me read this one by one. Before I start, I should take their questions first, I think. Please raise your hand again so that I could unmute yourself. Who was there? He was Ahmed who raised his hands? Ahmed Hassan. Ahmed Hassan, you can turn on your mic and ask the question. जी Ahmed. सर कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स हैं तो वो हम लोग पूछना चाहते हैं तो आपने तो हमें म्यूट किया हुआ है। Sure, sure. Come on, this. Well, this was the question. This was the answer we discussed. Question number five. Now you can ask the meaning of this question from this. Uh, personifies sorry, please repeat it.
personifies. Okay, personifies. Well, gentlemen, dear student, we have my dear uh, Ahmad, we have discussed this word in the class as well. Let me repeat it. Personifies means it's a figure of speech in which we present non-living thing in such a way that they look like living thing. For example, if I say that I told you the example of your bag, it was too heavy, and when you tried to pick it up, the bag cried, "Don't pick me up. I'm too heavy." So you can say that bag can talk like this? No, this is called personification. In the same way, when I say that the engine of the train whistles, do you think that engine itself whistles? No, somebody else. So these are called all personifies. Is it clear? So is it Yes, clear, sir. class? Yes, sir. Okay, the poet was overjoyed upon seeing the daffodils, and he personifies the movement of these flowers. And the next one is, how do the waves beside the daffodils compare to the daffodils themselves? Here, let me answer this question. The daffodils and the waves, this is the heading. Even though the waves are dancing too, the daffodils are more joyful and lively. They outdid the sparkling waves in glee. The swaying movement of daffodils compared to the beauty of waves in the lake, according to the poet, daffodils seems to be happier than the waves. Now let me explain this answer for you. Even though का मतलब होता है अगरचे, the waves are dancing too. Waves भी dance कर रही हैं. The daffodils are more joyful and lively. लेकिन वो जो daffodils हैं वो उनसे ज्यादा lively हैं. दे आउटडेट का मतलब ने कहा था ओवरवेम करते हैं, ओवर पावर कर देते हैं, आउटशाइन कर देते हैं. स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ग्ली का मतलब हैप्पीनेस होता है. वो जो चमकती हुई तालाब की लहरें हैं, खुशी के साथ जो झूम रही होती हैं, उनको भी वो पीछे छोड़ जाता है. द स्वेइंग मूवमेंट, हिलने वाली जो मूवमेंट होती है डैफोडिल्स की रक्स करती हुई, इन कंपेयर टू द ब्यूटी ऑफ द वेव्स ऑफ द लेक. झील में पानी लहरों की शक्ल में हलकूरे लेता है और जो हल्के बनाता है, जो दायरे बनाता है, वो बड़े खूबसूरत है. लेकिन उसके मुकाबले में वो जो डैफोडिल्स है वो ज्यादा खूबसूरत है. द ब्यूटी ऑफ द वेव्स इन द लेक, अकॉर्डिंग टू द पोएट, डैफोडिल्स सीम to be happier than the waves. Well, there are the questions. Okay, what are those? I think there's no question. Okay, so if there's no question, should I move forward? Now, let me read the question 7. It says that what effect do the daffodils have on the poet's mood? Effects of the daffodils on the poet's mood. The daffodils fill his heart with pleasure and happiness. He says he could not help but feel joyful in their charmful presence. The sight had an everlasting effect on the poet's mood. And now the question number 8, what does the poet mean by jocund company? Jocund का मतलब होता है pleasant, company का मतलब दो साथ. So the jocund company of daffodils, that is the heading. And let me read the answer. The jocund company means cheerful and joyful companionship. The daffodils seemed like friendly, happy beings keeping him company. The poet felt overjoyed in the company of daffodils, even though he was walking aimlessly before this. I think all is clear. I've told you the meaning of jocund. Jocund means pleasant, and company means the people who go around you, the people who. It is not only the people, it can be wind, it can be grass, it can be trees, it can be daffodils. In the company of nature, the poet feels happy. Okay, now what question number 9? What happens when the poet lies on his couch in a vacant or pensive mood? Vacant means empty, pensive means sad. So what should be the heading of the answer? The poet in a vacant or pensive mood. The memory of the daffodils flashes in his mind eyes, bringing back the joy of he felt when he first saw there. He feels overjoyed as his heart dances with those daffodils. And question 10, what is the inward eye that the poet mentions? The inward eye of the poet, that is the heading of the answer. The inward eye refers to the poet's imagination or memory. It describes his ability to recall beautiful moments and sights, such as the sight of encountering beautiful daffodils in solitude. Okay, class, all is clear? I don't think so. There is anything isn't the problem. Solitude means loneliness, and loneliness, such as the sight. Sight means seen. Encounter means that come across in front of your eyes, that you can meet, that you can see. Okay, now, question number 11. How does the memory of the daffodils affect the poet in the end? So the answer is the memory of the daffodils. So the memory fills his heart with pleasure and his spirit dances with the daffodils. Even when he is alone and is in sad or thoughtful mood, he feels joy
just by remembering them. That is the main idea of the poem, that once he saw a beautiful, enchanting scenery, and right after many days, whenever he feels sad or gloomy, he just recall that beautiful scenery and his heart fills with pleasure. That is the main idea of the poem. Okay, now what is there? The reading and critical thinking questions. These are the questions that we were talking about. These are 8 in number. What is the central idea of the poem Daffodils? So here is the answer. The central idea of the poem Daffodil, that is the heading of the answer, and you can say this. The central idea of the poem is the joys and inspiration the poet experiences from the sight of a field of daffodils. The daffodil symbolizes beauty, nature's power to uplift the human spirit, and the lasting impact that a single moment of natural beauty can have on the poet's emotions and thoughts. Well, gentlemen, my dear students, if you can understand these answer, you can put it into your summary as well. So let me read it again. The central idea of the poem is the joy and inspiration the poet experiences from the sight of a field of daffodils. The daffodil symbolizes beauty, nature's power to uplift the human spirit, and the lasting impact that a single moment of natural beauty can have on the poet's emotions and thoughts. Really, is there any question and any problem in it? Because these questions probably appear in the examination, so you need to keep in mind. I never ever encourage you to cram it. I just want you to understand it and write it in your own words. Is it all clear, class? Do you want to? Is there any question related to this? Specific questions? If not, then let me read the question number 2. Describe the settings where the poet saw the daffodils. How does the setting contributes to the overall mood of the poem? The answer is the setting of the poem Daffodils. The poet describes seeing the daffodils beside a lake and beneath trees with the flowers fluttering and dancing in the breeze. The setting is peaceful, natural, and serene, creating a joyful, lively, and uplifting mood. The vastness of the scene, with the thousands of daffodils stretching endlessly, enhances the scene of beauty and harmony that fills the poet with happiness. Let me read this again for you. The poet describes seeing the daffodils beside a lake and beneath trees, with the flowers fluttering and dancing in the breeze. The setting is peaceful, natural, and serene. Serene means peaceful, creating a joyful, lively, and uplifting mood. The vastness of the scene, with thousands of daffodils stretching endlessly, enhancing the scene of beauty and harmony that fills the poet with happiness. Okay, question number 3 says that how does the poet describe the daffodils? With imagery does he use to bring them to life? What imagery does he use to bring them to life? And I hope so. How many people have understood the meaning of imagery? When I say that imagery is is a figure of speech, please raise your hands if you know the meanings and terms of imagery, figure of speech. How many of you know the word imagery? G, please. Please raise your hands if you know the concept of imagery. How many of you know the concept? Only Abdul Ahad knows, and what about rest of the other class? No one knows. So it means that Ahad, can you explain the word imagery? Can you? So should I unmute you? Ahad, I have unmuted you. You can turn your mic on and express what imagery is. Ahad, if you cannot, Ahmed Tahir, I have unmuted you. No? Okay, so no one. Okay, Ahmed? Ji Ahmed. यस सर सर इमेजरी वो होती है जो हमारे माइंड में बन रही हो एक पिक्चर की तरह Hmm. Ahmed, can you speak louder? सर इमेजरी वो होती है जो हमारे माइंड में बन रही हो एक पिक्चर की तरह प्रॉपर ठीक है. Imagery is a picture that appears in our brain, or how it appears when we read some words, when we read some sentences, and सर those sentences picture, ये तो हमारे माइंड huh, well, yeah, those words create a picture in our brain,
Those words are called imaginative word or imagery. The poet has used imagery, vivid imagery to create picture in our brain. So how does the poet describe the daffodils? What imagery does he use to bring them to life? So here is the answer. The description of the daffodils, the poet described the daffodils as crowd, as a host, as a never-ending line, emphasizing their abundance and liveliness. He uses vivid imagery like golden daffodils fluttering and dancing and tossing their heads in sprightly dance to bring them to life, evoking a sense of movement and joy, as if the daffodils are full of energy and life. Okay, so the poet described the daffodils as a crowd, a host, a never-ending line. When you say that never-ending line, stars comes in a brain. So this makes a picture. So this is that something's infinite going on. And then he uses vivid imagery like golden daffodils fluttering and dancing and tossing their heads in sprightly dance to bring them to life, evoke means appear, make, evoking a sense of movement and joy as if the daffodils full of energy. Identify and explain the use of personification in the poem. Personification we have discussed in earlier. Personification in the poem Daffodil, that is the heading. And what does it mean? Personification is used in the poem when the poet describes the daffodils as dancing and tossing their heads. These are human qualities and attributed to the flowers, which helps create the image of the daffodils that are full of energy and joy, almost as if they are celebrating life in the breeze. Question 5. What is the effects of the rhyme scheme on the poem's rhythm and flow? The rhyme scheme of the poem Daffodils. And this is the thing we didn't discuss in the class, and that is the best opportunity to discuss here. What is the rhyme scheme? The poem follows a regular A B C rhymes scheme which creates a smooth rhythmic flow. This regularity mirrors the gentle, calm movement of the daffodils and the overall serene atmosphere of the poem. The rhyme scheme contributes to the scene of harmony and tranquility in the scene, in the scene the poet describes. Let me read this again for you. Ahmed Hassan, do you want to say something? You have raised your hand. Should I unmute you? Ahmed Hassan. Ahmed Hassan, do you want to say something? Sir, I didn't got the question number 3. You didn't get the screen. You are not able to see the screen. Sir, I didn't got the question number 3. Sorry, I still couldn't understand you. Please repeat. I didn't got the question number 3. Question number? Sir, question number 3 समझ में Question number 3. 3. You are talking about question 3. Okay, let me go back to the question number 3. But first of all, let me read this question 5 for you, and then I will go back to question 3. What is the effect of the rhyme? Let me tell you what rhyme scheme is. We haven't discussed rhyme scheme. राइम स्कीम का मतलब ये होता है कि बेटा जब हम पोएम पढ़ते हैं ना, उसकी जो पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसकी जो साउंड अगर दूसरी लाइन के आखिरी वर्ड से मिल रही होती है तो इसका मतलब दोनों की ए स्क्रीन ए है। अगर पहली लाइन का आखिरी वर्ड और दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड आपस में नहीं मिल रहा तो हम इसको ए बी कह देते हैं। लेकिन अगर तीसरी लाइन का आखिरी वर्ड पहली लाइन के आखिरी वर्ड से मिल रहा है तो फिर हम उसका नाम ए दे देंगे। तो ये ए बी और सी जो है ना इसकी राइम स्कीम है। और ये राइम स्कीम विच क्रिएट्स अ स्मूथ रिदमिक फ्लो बनाती है। और दिस रेगुलरिटी मिरर्स द जेंटल काम एंड मूवमेंट ऑफ द डेफोडिल्स एंड द ओवरऑल सीरीन एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम। यहां तक भी लिख लेंगे, काफी है, ठीक है। तो लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3 एज ही हैज मेंशन। Here is the question number 3. How does the poet describe the daffodils? What imagery does he use to bring them to life? बेटा imagery की हमने बात की थी कि imagery क्या होती है। imagery वो words होते हैं, वो sentences, expressions होते हैं जिनको पढ़कर पढ़कर हमारे जहन के अंदर पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। ये pictorial words होते हैं। तो ये pictorial words कैसे imagery बना रहे होते हैं? The poet described the daffodils as crowd, a host and a never ending line. ठीक है, यानी जब पोएट क्या करता है वो डिस्क्राइब करता है क्राउड को। जब हम क्राउड देखते हैं मजेने के अंदर बहुत से लोग आ रहे होते हैं, आते कि नहीं आते। होस्ट का मतलब ही नंबर ऑफ पीपल होता है, और नेवर एंडिंग का मतलब एक ऐसी लाइन जो खत्म ही नहीं हो रही है, इन्फिनिट लाइन है। ये हमारे साथ पिक्चर बनी तो एम्फेसाइजिंग देयर अबंडेंस एंड लाइवलीनेस, ये बताता है कि वो बहुत ज्यादा चीजें हैं। और ही यूजेस विविड इमेजरी, और इमेजरी बनाता है कौन सी, गोल्डन डैफोडिल्स की, कि डैफोडिल्स हैं और वो सुनहरे रंग के हैं, सोने के बने हुए हैं किस्म के ना। तो सोने को तो वो नहीं है लेकिन उनका कलर इस तरह का है कि वो गोल्डन दिखाई दे
दे रहे हैं। तो फ्लटरिंग, वो मूव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, और टॉसिंग देयर हेड्स, और अपने सरों को मूव कर रहे हैं इन स्प्राइटली डांस, और पुरजोश अंदाज से रक्स कर रहे हैं, टू ब्रिंग देम टू लाइफ, ताकि वो जिंदा महसूस होते हैं, इवोकिंग सेंस ऑफ मूवमेंट एंड जॉय, और हमारे जहन के अंदर एक मूवमेंट, जॉय और हैप्पीनेस पैदा होती है। एज इफ द डैफोडिल्स आर फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, यूं लगता है कि जैसे डैफोडिल जो है वो जिंदगी से भर गए। ठीक है मेरे बेटा, क्लियर होगी बात? शुड आई गो ऑन? शुड आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा जी, ये हमने बड़ा ही कर लिया, 5 कर लिया। 6 पे आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज अ जोकन कंपनी? ये हमने करना है हमने। अब जोकन का मतलब प्लेजेंट होता है, कंपनी का मतलब दोस्त और साथ होता है। इसकी हम डेफिनेशन बनाएंगे। द डैफोडिल्स, जी अब्दुलरहमान, बेटा अब्दुलरहमान को हम क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब्दुलरहमान, लेट मी अनम्यूट यू। वेयर इज गॉन अब्दुलरहमान? आपने हाथ खड़ा किया, फिर आप गायब कर दिया अपने हाथ, जादू कर गए अभी आप। चलें, ठीक है। The Daffodils is Joking Company में हम आंसर करेंगे। The poet describes the daffodils as joking company because they are cheerful, lively, and bringing joy to his heart. The daffodils have a positive impact on him, making him feel happy, content in their presence. Their beauty uplifts the spirit and fills him with a sense of delight and lightheartedness. Is it clear? Any problem? ऑल इज ओके। द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल एज जोकन कंपनी, जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है डैफोडिल्स को जोकन कंपनी की तरह, इसलिए कि वो चेयरफुल होते हैं, लाइवली हैं, और ब्रिंग जॉय टू हिज हार्ट है। चेयरफुल का मतलब खुश, खुश करने वाले, खुशगवार। लाइवली मतलब यूं कहते हैं कि जिंदा, जिंदा दलान लाहौर नहीं कहते, तो जिंदा दिल। और जो ब्रिंग जॉय टू हिज हार्ट, उसके दिल को खुशी फ्राहम करते हैं। द डैफोडिल्स हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देम, तो डैफोडिल्स का जो देखना है उसकी उसकी जिंदगी पर एक मस्बत असर डालता है। मेकिंग हिम फील हैप्पी एंड कंटेंट इन देयर प्रेजेंस, तो वो खुश, अपनी मुतमिन जिंदगी गुजारता है, वो खुश हो जाता है। देयर ब्यूटी अपलिफ्ट्स हिज स्पिरिट, उसकी जो डैफोडिल्स की ब्यूटी है, उसकी रूह को जो है ना वो अपलिफ्ट कर देती है, मतलब बेहतर करती है, प्लेजेंट कर देती है, खुशगवार कर देती है। एंड फिल्स हिम विद अ सेंस ऑफ डिलाइट एंड लाइट हार्टेडनेस, और उसके दिल के अंदर खुशियां आ जाती हैं, वो हल्का फुल्का अपने आप को महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएट मेंशंस द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। What do you think the means by his, and how do the daffodils contribute to this feeling? ले बेटा जी, bliss of solitude क्या चीज है? द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड से क्या मुराद है? वो कहता है कि द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर्स टू द पीस एंड हैप्पीनेस द पोएट एक्सपीरियंसेस when alone with his thoughts, particularly when he recalls the daffodils. The memory of the daffodils brings him comfort and joy in moments of solitude, reminding him of the beauty and joy he once experienced even when he is alone. द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर्स, ये उसकी तरफ इशारा करती है, पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ द पोएट एक्सपीरियंसेस व्हेन अलोन विद हिज थॉट्स, जब वो अपनी सोचों के साथ अकेला होता है, तो उन सोचों में जो खुशी आ जाती है उसको वो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड कहता है। हमने सॉलिट्यूड के ऊपर बात की हुई है, अलोन सोल, तन्हाई को कहते हैं। तन्हाई दो तरह की होती है, एक तन्हाई जो आपको काट खाती है, और एक तन्हाई जो आपको प्लेजेंटनेस देती है, आप चाहते हो कि मैं अकेला रहूं, तो वो इंट्रोवर्ट होता है। हमने बात की हुई है इसके ऊपर। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स ब्रिंग हिम्स कंफर्ट, ठीक है, और कंफर्ट एंड जॉय इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड, रिमाइंडिंग हिम ऑफ द ब्यूटी एंड जॉय ही वंस experienced even when he was alone. Okay, imagine you are the poet revisiting the same place after many years. Write a short paragraph describing your feelings and the scenes as it might appear now. ये क्वेश्चन particularly और in spiritually you should have done yourself, ये आपको खुद करना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, याद रखिएगा, ये अगर क्वेश्चन आप इसी तरह से रट्टा लगा के याद करके प्रोड्यूस कर लेंगे, आपकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। यू विल बी नो मोर एनीवेयर, यू विल स्टैंड नो वेयर। तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी आपको करने के लिए आई वुड रिकमेंड यू, आई विल सजेस्ट यू, आई विल इनकरेज यू कि आप इसको क्वेश्चन को खुद लिखें। लिखने के बाद आप जिसको जो है ना मुझे अपनी बल्कि ना नोटबुक पे मुझे शो करवाइए, दिखाएं मुझे। बल्कि मैं कहता हूँ कि आपका होमवर्क है कि आप कम से कम ये मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, गॉट इट? तो मैं आपके लिए एक, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपका ये जो है ना करने लगे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि रिविजिटिंग द सेम प्लेस एज अ पोएट। अब ये देखें, मैं इसको हेडिंग दी है, और एज आई स्टैंड बाय द सेम लेक वेयर द daffodils once danced in the breeze, I feel a deep sense of nostalgia and peace. The scene has changed, perhaps with fewer daffodils now, but the memory of their golden beauty still lingers in my heart. Lingers in my heart का मतलब ही दिल के अंदर मौजूद रहना,
और द जेंटल ब्रीज स्टिल स्टर्स द ट्रीज। अब जेंटल ब्रीज जो है ना, जो ब्रीज चलती है वो दरख्तों को स्टर करती है, मूव करती है। एंड द वाटर रिफ्लेक्ट्स द क्वाइट स्प्लेंडर ऑफ नेचर। जो वाटर है वो रिफ्लेक्ट्स करता है, उसमें हम अक्स देख सकते हैं क्वाइट स्प्लेंडर ऑफ नेचर की, जो खूबसूरती है कुदरत की, वो देख सकते हैं। आई फील ग्रेटफुल फॉर द मेमोरीज दैट रिमेन। और मैं शुक्र अदा करूंगा कि वो अभी भी अच्छी मेमोरीज मेरे दिल में। अ टाइमलेस कनेक्शन बिटवीन मी एंड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड मी। और देखो बेटा, याद रखो, आर्ट जो होता है ना, ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर है। एक जगह चीज आपकी जो जहन में खूबसूरती जब आ जाती है ना, वो हमेशा रहती है, वो खत्म नहीं होती है। ठीक है जी। चलें, ये हमारे क्वेश्चन वाली आर्ट पूरे हो गए हैं। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन है। ये द बॉयज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम क्लास में कर चुके हैं। और इसमें जो है ना वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें वो जो हमने जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स, तो ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। हैप्पी, लोनली, तो इसका आंसर वाला क्या होगा? इसका आंसर जो है वो लोनली आंसर होगा। ठीक है जी। तो बेटा ये इस तरह के भी ये चीजें देखें, सारी पावर पॉइंट्स तैयार हैं, चीजें आपके लिए मतलब अवेलेबल हैं। ये आप ही के लिए बनाई गई चीजें, लेकिन पर्पज ये है कि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं ये करूँ चाहूंगा कि अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक क्वेश्चन आप पढ़ के सुनाएं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मुझे पढ़ के सुनाइए। मैं क्वेश्चन 7 पढ़ने लगा हूँ। आप मुझे बताएं कौन वॉलंटियर बच्चा है अपना, जो है ना वो हाथ खड़ा करेगा और कहेगा सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, या मुझे ऐसे याद भी हो गया हुआ है। कौन है बेटा जी? जी, अब्दुल अहद है, अब्दुल रहमान, अहमद हसन, अहमद रिजवान, एहसन रिजवान। जी, सबसे पहले हाथ खड़ा किया अहमद ताहिर। जी बेटा, ये अहमद ताहिर, मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है। आप इस तरह क्वेश्चन को पढ़ के सुनाए जरा, ऊंची आवाज में बोलिएगा जरा। Bliss of solitude. The bliss of solitude refer to the peace and happiness of the poet experiences when alone with his thoughts. Particularly when he recalls the daffodils, the memory of the daffodils brings him comfort and joy in the moments of solitude, reminding him of the beauty and joy of his once experienced even when he is alone. Thank you. एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा जी। अब्दुल अहद, अब्दुल रहमान, अहमद हसन। जी बेटा जी, प्लीज देखिए ना, अब आपको ये सिर्फ पढ़ना है और यू कांट रीड इट बिकॉज इट शोज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और बेटा जी शाबाश, अपने आप को मोटिवेट करें मेरे बच्चों। जी अहमद, आप बेटा जी, अहमद आपने अब माइक अपना बंद कर दें। जी एहसन जिशान, शाबाश बेटा जी। एहसन अपना माइक ऑन करें बेटा।